With this, move on to our next panel, which is innovation in education. And we have with us Mr. Ashok Das, who is chairperson of Odisha State Higher Education Council. He was a distinguished scientist and head of Laser and Plasma Technology Division in BARC, and a preeminent associate with DRDO, ISRO, Mumbai University, and the University of Pune. Professor Das has been on the advisory committee of DST, chairman of the planning committee for plasma schools, chairman of program advisory committees of SERB and DST. Distinguished career. So Mohanlal Yadav, director cum commissioner, Rajasthan Council of School Education, is also the state project director in Samagra Shiksha Abhiyan and Rajasthan School Shiksha Parishad. He worked as a registrar in the Board of Revenue, commissioner in departmental inquiry, special secretary GAD, amongst several others. His additional responsibilities include being the project director, rural development. Let me introduce Mr. Duga, who's been in charge of various departments and portfolios throughout his career in administrative services, including the Commissioner of Municipal Corporation, Rajnandgaon and Raipur, an Assistant Commissioner of Revenue in Durg. He earlier worked as Collector and District Magistrate of Korea District and as Managing Director of Milk Corporation and Swachh Bharat Mission. Welcome to the panel, ladies and gentlemen. The education ecosystem currently is at the intersection of the offline and online modes, compelled by external factors. In fact, a lot of technologies that we discussed in the previous panel, the panelists also delved on this issue of, how to make the online connect more effective, and perhaps when it comes to education becomes even more important. And this has actually, greatly accelerated the digital adoption in the education delivery, the kind of circumstances that we've been through. With such changes comes the need for creativity and faster improvements, ensuring that no gap in skilling process for both learners as well as learning providers. That means capacity building of teachers, those who have actually been over the hump, is extremely important. Therefore, innovation is essential. Introduce and improvise qualitative changes in educational content, teaching methods, and practices. Technology-backed innovations are, in fact, key to education in India at 75. But there are challenges facing the system, students and teachers alike. Definitely, digital is the way. COVID is behind us. And we have to restore the teacher-pupil connect at all levels, whether school or higher education. Second problem is that people in higher education have actually found themselves at crossroads, becoming unemployable due to lack of digital or otherwise what the industry is demanding at this moment. There has been a transition phase wherein people did not have an opportunity to gather those skills. On top of that, there are 4 problems that the education sector suffers with. Lack of budget. There are too many pressure on grades starting at school. The poor learning outcomes, again, starting at school, and outdated curricula. We've been working on it, but the road still needs to be traveled for long enough. So leveraging online and digital learning. So my first question, how to improve the outcomes at all levels, including the school and the higher education? So let me invite Mr. Ashok Das again. Kindly take 3 minutes each. There are 3 sets of questions, and I'll keep coming back to you for all the 3 questions. I'll start with Mr. Das, please. Good afternoon. I'm glad to be here. Now the question is, how do we make both these ends meet in terms of, can you repeat the question again? How to improve the learning outcomes, both at the school now learning outcome is a concept which has always been implicit in our education earlier, and that was basically because the skill was not so important as the fundamental education. Now, with the increase in population and the global knowledge market, the skills have become very important. So the learning outcome has become extremely important. Now, in my state, what we are looking at, how do we integrate learning outcome? Now, everybody now today talks about learning outcome, but nobody knows how do I integrate in a manner
that when I look at the report card of the student, I would know how much he has learned, and I get a cumulative picture of what he has learned, where he has excelled, and where he has not excelled. I personally would think that the curriculum, the examination pattern, the books, the learning method, and the teaching method all should get integrated in a manner culminating in the examination pattern, whether it is continuous assessment or discrete term-wise assessment. They should all integrated to reflect each one of the learning outcome, whether it is graduate attribute, whether it is the course, syllabus, curriculum, subject outcome, or the typical course outcomes. So what we are now trying to do, because NEP has given us an opportunity, is to combine all of them on one integrated platform, starting from the curriculum, starting from the practicum, starting from the field work, going gradually onto the testing methodology, the question pattern. In fact, we are trying to integrate technology in making a question bank and making the examination as much automated by testing the cognitive pattern, the narrative pattern, the remembering, the data value, the way of correlating, the way of logical reasoning, both in continuous and in term assessments. We also have added a component called self-learning technique, assisted self-learning technique, whereas some units the child learns and then comes back to the teacher for doubt clearing. So we have a doubt clearing session. So I think it has to be looked at in an integrated manner for learning outcome to be actually integrated. Unfortunately, when we talk of learning outcome, it is only a theory written in the curriculum books, and nobody actually looks at creating a linkage right from end-to-end process so that you know what has been the learning outcome. I think that's what I wanted to tell. Thank you. Thank you. So that's one state view. So let's move on from Odisha to Rajasthan. Mr. Mohanlal Yadav. Good afternoon to every respected panelist and dignitaries. सर, राजस्थान में जो जैसा कोरोना के कारण जो लर्निंग गैप बढ़ा और उसको दूर करने के लिए हमने एक वर्कबुक का सिस्टम शुरू किया और उसमें क्लास के अकॉर्डिंग जो भी कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8 उस लेवल्स के हिसाब से वर्कबुक का काम शुरू किया और उससे लर्निंग गैप कम हुए। और जो कोरोना के कारण जो बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते थे तो उसका एक पेरेंट फ्रेंडली भी थी ये वर्कबुक और स्टूडेंट फ्रेंडली भी थी और उससे जो लर्निंग गैप कम हुआ उसके कारण राजस्थान जो है इंडिया में बेस्ट जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, जो लर्निंग जो गैप दूर करने का या लर्निंग प्रोसेस का जो सिस्टम है, उसमें जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसमें राजस्थान सेकेंडरी स्थान पे रहा। और दूसरा जो पीजीआई जो होती है उसमें हमारे राजस्थान के जो है जो पूरी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे होता है। उसमें राजस्थान के फर्स्ट 3 थे वो राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट जो पहले स्थान पे थे और बाकी जो हमारे 28 जो जिले थे वो उनको भी एक्सीलेंट कैटेगरी में उनको रैंकिंग प्राप्त हुई सर। और इसका हमने जो है ऑल इंडिया रेडियो से भी बच्चों को जोड़ा, दूरदर्शन से भी बच्चों को जोड़ा और जो टीचर्स है उनको मतलब वर्कबुक के माध्यम से बच्चों का जो पूरा जो लर्निंग गैप था उसको दूर किया और एक तरह से वर्कबुक जो है एक ब्रिज का काम किया लर्निंग गैप को दूर करने के लिए। Thank you. So we have Odisha and Rajasthan and awaiting to hear from Chhattisgarh, Mr. Narendra Kumar Duka. नमस्कार सर, आप सबका स्वागत है सर। जैसा कि कोरोना के काल में काफी लर्निंग को लॉस हुआ था तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुबर द्वार योजना चालू करी थी। पढ़ाई तुबर द्वार योजना से हम लोग एक नया सीख लिया। बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, गाँव था, तो कैसे भागीदारी अधिक से अधिक बच्चों को और पेरेंट्स को बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला तो समुदाय से हम
कैसे जोड़े, समुदाय के लोगों को कैसे जोड़े, इस उद्देश्य से अंगना में शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें समुदाय के लोगों को जोड़ा गया, माताओं को जोड़ा गया, क्योंकि जो बच्चे होते हैं 3 या 4 घंटा रहते हैं, माताएं सब काम में चले जाते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहां पर ट्यूशंस बच्चे पढ़ाने का परंपरा नहीं, जैसे शहरों में ट्यूशंस पढ़ाते हैं। तो ऐसा विचार आया कि माताओं को ट्रेन किया जाए, शिक्षित किया जाए, जो बच्चों को अपने आंगन में 4-5 माताएं इकट्ठा होकर उनको कैसे बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं कि उनके पास मिनिमम साधन है, सुविधा है। सबसे पहले इसमें समुदाय को जोड़ने के लिए प्रयास किया गया। फिर समुदाय को जोड़कर ग्रुप बनाया गया छोटे छोटे। फिर टीचर्स की ट्रेनिंग की गई, बाकायदा ट्रेन किया गया। वो टीचर्स समुदाय के माताओं को प्रशिक्षित किया ताकि वो उनके पास जो साधन है, घर में छोटे छोटे साधन हैं, उनसे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। टीचर्स का शिक्षण हुआ तो सरल से सरल गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों के आधार पर कैसे सिखाया जाए, इस पेडागॉजी का उपयोग किया गया। साथ में जब हमको और तब एहसास हुआ कि जब हमारा अशर का रिजल्ट आया, अशर नैश का सर्वे आया, तो हमारा स्टेट काफी पीछे था। तो हम लोगों ने विचार किया कि इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, इस ओर हमारा एकदम फोकस था। फिर हम लोगों ने उस पर काम किया और एक हम लोगों ने न्यूक्लियर ऐप डिजाइन किया, जिससे बच्चों का अटेंडेंस होता है। उसके आधार पर बच्चों को कोई भी वर्ड्स के ऊपर रखते हैं तो उस पर कैसे अपन कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया गया। और एक कम्युनिटी के रूप में टीचर्स, जो माता शिक्षक लोगों ने पहले माताओं को ट्रेन किया। माता अपने आंगन में बच्चों को बहुत बढ़िया ढंग से सिखाती है। ऐसे करके हम लोग जब आगे बढ़े तो शुरुआत में एक पायलट के रूप में किया, फिर लगभग 40,000 टीचर्स का सिलेक्ट हुआ, 24,000 स्कूल की 3 लाख माताएं चयन की गई और 4,37,000 बच्चों पर उसको फोकस किया गया। उसका परिणाम फिर धीरे धीरे आने लगे। आज ऐसा हो रहा है कि हर गांव में शाम के टाइम जब इकट्ठा होते हैं, बच्चे भी पढ़ते, तो एक माताओं में कंपटीशन पैदा हो गया, जोर पैदा हो गया कि वो स्मार्ट माता बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। उन लोगों ने खुद भी पढ़ना थोड़ा सीखा, छोटे छोटे चीजों से वो किया। तो उसका परिणाम देखने को मिला कि उनको कुछ पुरस्कार वगैरह भी देते थे, जो बहुत बेहतरीन काम करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इसके लिए स्पेशली एक सपोर्ट कार्ड बनाया। वो सिंपल सा सपोर्ट कार्ड था, उसमें टिक लगाना था कि इनका जो बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो कैसा है, अलग शब्द का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, रंग पहचान रहे हैं कि नहीं, कलर पहचान तो नहीं रहे, शारीरिक विकास के बारे में, स्वच्छता के बारे में, तो छोटे छोटे मिलान के बारे में, वचन करना, अंक पहचानना, वस्तुओं को जोड़ना, घटाना, इन चीजों के बारे में इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से उसका आकलन। धन्यवाद। मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ अगले सवाल के साथ। इन बिटवीन लेट मी मूव ओवर विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन, which is how to make Indian research count on global platforms. Why do we suffer and how to correct it? I want to pose this question to Mr. Das. The Indians getting into global platform, I only believe that with the advent of internet, with the advent of IT and the network, the superhighway that is provided by the internet and the communication, the data width, bandwidth that are available today, I think the basic, we need to first get our foundations right. And we need to study what are the global skills that is needed. One of the greatest examples that has happened in late 90s and early 2000s is when Indian IT service sector actually competed with China to take over the entire service sector, occupy the entire service sector in the world. Indians, to my belief, Indian students are hardworking. Indian students are intelligent. The only thing that we lack, and we used to lack, is access to modern facilities, access to absolutely modern technologies, and
absolute access to good teaching and learning facilities and equipment. Gradually, as time has passed, I think our governments, our state governments, central governments, the facility providers have become aware that research and innovation are the keys to the knowledge century. The 21st century is the knowledge century, and research innovation would provide the main critical factor, critical precursor. And so you will find that applicable, socially applicable research is taking the front page now. And in the state of Odisha, we have done a few things. One is, of course, we have provided access to the world of knowledge, the best resources, electronic resources that a child or a student abroad has. Is a student in the tribal areas of Odisha would also have access. The government has taken care of it by making a consortium of universities and colleges and procuring all kinds of e-resources. So our students have access to across 2,000 publishers, the electronic books, across maybe 3,500 journals, magazines, everything that is needed. We have in Odisha, there is a dominance of skill training, and skilled in Odisha is supposed to be becoming one of the best in India, and it is being proved in various competitions and hackathons that is being conducted nationally and internationally. So the basic idea is incentivize, give help to inclusive everybody, because Odisha has a 40% of SCOCH group. Get the fundamentals right, get the motivation right, and give access to the best that is available somewhere in the world. It doesn't happen overnight. This is a very slow process, and it will definitely take time. We have maybe another 5 years to go, but keep to this mantra, give a good education, give good scaling, give good access, make an inclusive plan for education, and excellence will come, may not be overnight, but with time. I think that's what I in fact, fully agree with you. And more so it is true in the case of the science learning, not so much true in case of social sciences, because somehow it has so happened that all the technology infusion that has taken place, it has been partial to subjects other than social sciences. Maybe may I make a submission in this? Now, This is something that we have realized, that though last 70 years have been the science innovations, gradually we have come to realize that the science innovation would go to the lay public, provided the social science innovations and the cultural innovation happens. And so today we have created a research and innovation platform where the science, social science, language, literature, cultural areas come together, brainstorm, we fund them for research, and we are trying to take a path where multidisciplinarity in terms of science innovations, getting a social science innovation, like maybe this Amul milk movement, gets actually, and the Odisha's, the SSG innovation of women self-help group is probably one of the biggest social innovations. So you are absolutely right. Entire country should focus both science and social science together. Yeah, in fact, very heartening to hear what you just mentioned. And taking it further from this is also a fact that, there are two things to it. One is the research scholars, second is the professors, the teachers. It's important, it's very important to do the work that you just mentioned about the innovation in science and social science. The skilling and reskilling of the guides to pursue, make the scholars pursue the learning and the PhD thesis, writing papers, so on and so forth, is extremely important. I may have access to all the resources in the world, being a social science student, but do I have an equally able guide to guide me in my research, so that that research kind of becomes an equivalent, a valid research if I compare anywhere else in the world. Prior to the age of internet,
people would write their papers and thesis only to fulfill the requirement, meaning to say there was a lot of plagiarism happening those days. Internet age has actually manifold provided that opportunity wherein you just have to do copy paste and put a reference to it, and your papers or your thesis is taken care of. It kind of passes through under the radar of the supervisor or the guide, which actually should get caught at that level. So those are the kind of things. So that learning and teaching both have to pursue at the same level, wherein the guidance has to come on top rather than the student doing things on his own and the professors kind of not being aware of it. So this is one problem. I don't know how you react to that, Mr. Das. I believe that initial stages, the aptitude of research and a research ecosystem must be mentored. And mentoring is very important. In fact, the concept of nationally appointed mentors was a good concept. In our state, what we have done, everything that we have done, every project, every researcher has access to a mentor. We follow them closely, and we also see the social relevance of what he is doing, whether it is science, whether it has a fundamental relevance or a social relevance. I agree with you, but as an ecosystem takes time to build. And so teaching, training the teachers, bringing in the spirit of research and innovation in the teacher, getting the concept or the attitude of innovation and entrepreneurship into our teaching learning community, which was a taboo otherwise. So these are difficult tasks, but I think the bigger vision should incorporate this implementable at the grassroots by training the students, because students and teachers are the largest population. You have 15 lakh teachers in India, and you have 40 million students probably. And so you see the population. We have not been effective so far in university system, but there is no time like now to try. I agree with you because, the concept of mentorship from the industry has been discussed and debated for several years now. That, in the entire learning process, along with your teaching guide, you have a mentor who is picked up from the field as an expert from the industry. But again, that also has yet to see the light of the day. You said it right. That is something which may take some more time. It has already taken more than a decade. It may take maybe another 5 years or so. So anyway, the future is bright. So good submission made there. And that takes me to Rajasthan. With my next question, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हमारे tier 2, tier 3, tier 4 towns हैं, और उनमें जो गरीब बच्चे थे ड्यूरिंग कोरोना स्कूल बंद होने के बाद में, वो बहुत से लोग वापस नहीं आए, और ये लगभग ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि पूरे देश में सभी ट्राइबल बेल्ट्स में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, सब जगह ये देखा गया है. उनके लिए क्या किया सर? उनके लिए हमने जो है, एक तो हमारा साला समदन ऐप है, उसके माध्यम से हमने मॉनिटरिंग की. और एक नंबर 2, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, और उसके माध्यम से सब लोगों का एक मॉनिटरिंग की. और एक टीवी से जो है, शिक्षा दर्शन जो है, टीवी में लेसन्स वगैरह दिलवाते थे, उसके माध्यम से हुआ. और चौथा है जो शिक्षा वाणी का था, वो ऑल इंडिया रेडियो से किया. और वीडियो क्लासेज हमने ई कक्षा भी चलवाई. और एक स्टेट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है MIS का, उसके माध्यम से किया. एक टीचर्स का जो है ऑनलाइन 1,34,000 टीचर्स की ट्रेनिंग की. और पेरेंट्स का भी जो है अलग अलग लोकल ब्लॉक लेवल पे ग्रुप बना के उनको भी कनेक्टेड रखा, उनको मोटिवेट किया. तो इसका आउटकम क्या निकला? सभी बच्चे वापस आए या फिर उनमें से काफी ड्रॉप आउट हो गए, उनको वापस लाना ही मुश्किल हो गया? कैसा रहा आपके यहाँ? सर हमारे लगभग जो है जो एनरोलमेंट है सर, वो 12 लाख बढ़ा कोरोना के जस्ट बाद. 12 लाख स्टूडेंट्स का जो है एनरोलमेंट बढ़ा. कितना कम हुआ था ये के दौरान? के दौरान लगभग 15 लाख कम हो गए थे. तो हमने पहले साल में 12 लाख को जोड़ दिया. जी
और फिर बाद में सर जो नेशनल जो अचीवमेंट सर्वे हुआ, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के जो सर्वे आए, उसमें राजस्थान की बहुत टॉप पोजीशन रही सर। तो उसी का कारण था जो हमने जो इनोवेशन शुरू किया उसके कारण से। जी नरेंद्र जी, ये सेम सवाल है आपके लिए भी कि कोरोना के बाद जो कि स्कूल ड्रॉप आउट बहुत बढ़ गया था और जो सबसे ज्यादा नुकसान मैं हुआ, बीच में निवेदन करना चाहूंगा। अभी हमने जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपियां चेक की 1,34,000 स्टूडेंट्स की, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और उसमें जो लर्निंग गैप्स का जो पैरामीटर्स थे, उसमें हमारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी रैंकिंग आई। वेरी गुड। नरेंद्र जी। नमस्कार सर। कोरोना के दौरान हम लोगों ने ये पाया कि सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, उनको लाना एक बड़ी चुनौती थी। हम लोगों ने सबसे पहले वही किया कि सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनको लाना, उनको जोड़ना, उनको जोड़ के सारे बच्चों को जो ड्रॉप आउट छोड़ दिया है उनको कैसे वापस लिया जाए। मुझे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि सारे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आफ्टर कोरोना वो गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। इसके लिए हम लोगों ने समाज का उपयोग किया, समुदाय का उपयोग किया। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो माताएं थी, स्मार्ट माताएं, जो जैसे पेरेंट्स, पिता से ज्यादा अच्छी बात माता की मानते हैं, तो उन जो 44,000 जो माताएं हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, इनका उपयोग किया। इन लोगों ने उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया, इससे बच्चों की उपस्थिति में। साथ में हमारे जो एक PLC ग्रुप बना है टीचर्स की, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, एक बड़ा एक्टिव ग्रुप है। हर महीना इनकी हर वीक लगभग इनकी समीक्षा होती है। इन लोगों के माध्यम से जो मुख्य धारा में जो बच्चे नहीं आ रहे थे, इन लोगों को जोड़ा। ठीक है, इनकी लर्निंग आउटकम कम, जो पढ़ाई में कमजोर था, उसके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग ऐसे 400 स्कूल तो लगभग कोरोना काल में बंद हो चुके। उन सारे स्कूल को हम लोगों ने रीओपन कराया और बच्चों को उधर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया था। साथ ही साथ जो बालवाड़ी है, लगभग 7,000 के प्लस हम लोगों ने बालवाड़ी प्रारंभ कराई है, जहां पर लगभग 36,000 बच्चे जो छोड़ दिए थे, किसी कारण से नहीं आ रहे थे, वो बच्चे आने लगे। ऐसा छत्तीसगढ़ में प्रयास किया गया है। पलायन के दौरान जो बच्चे चले गए थे, उनके लिए हर गांव में रजिस्टर बनाए थे कि कहाँ वो बच्चा गया, कब आया, उसको कौन से स्कूल से गया। इस ओर भी हम लोगों ने पूरा काम किया और इसका अच्छा परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। So, gentlemen, we have only time as much for the discussion. We have again overshot by about 5 minutes. I express my gratitude and heartfelt thanks to Mr. Ashok Das, Mr. Mohanlal Yadav, and Mr. Narendra Kumar Duga for joining us for this discussion. Innovation is in education. Of course, there are miles to go before we sleep, but the road has been well traveled so far. There are challenges that we have overcome, particularly, in the wake of digital, the opportunities provided to us have been harnessed well. And moving forward, there are several such the frameworks that have already been placed in to be given further shape moving forward. Thank you very much, gentlemen, once again for joining us. With this.